Very good evening to all of you. Welcome back to another video. So in previous video we see about the introduction of exercise 10.1 in which we discuss about the basic formulas of the coordinate geometry and the slope of the line, that how when we know about the inclination of line then how we will get the result of the slope of a line. So this all we discussed in our previous video. Now we are in this video we are discussing about the slope of a line when we have 2 points of a line, or in other sense we say that if the two points on the line segment in the form of coordinates is given to us, then what is the slope of that line. We will try to find out the slope of the line if the 2 points of a lines are given. Okay, so now we find slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ ए लाइन निकालनी है जब आपको लाइन के कोई 2 पॉइंट्स दिए होंगे और 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन होंगे, तो ऐसी लाइन की स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, तो सपोज दिस इज़ माय कार्टेशियन प्लेन एंड देयर इज़ ए लाइन. सो इस लाइन के मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. यहाँ पे ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैं Q ले लेता हूँ. सपोज करता हूँ P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 और y1. ठीक, और जो Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 एंड y2. आपको कल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, दैट दिस x1 कम्स फ्रॉम द x एक्सिस, सो हियर इट इज़ x1 एंड corresponding to y axis there is y1, and corresponding to x axis Q has the coordinate of x2 from the x axis, and from the y axis it has the coordinate of y2. Okay, so this is the line in which we are provided with the 2 points, and that 2 points are P and Q, and we know about the coordinates of the 2 points P and Q, that is P point has the coordinates x1 y1 and Q has the coordinate x2 y2. Now if we are provided like that situation, if we know about the 2 points of a line, if we know about the coordinates of the 2 points of a line, then how we could find the slope of a line, we can see in this topic. Okay, so we know that P is let P x1 y1 and Q x2 y2 with the 2 points on the line सपोज L. ये L लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने ले लिए P और Q. ठीक है, इसमें x1 और जो x2 है वो इक्वल नहीं होगा. इसमें आपका जो x1 होगा और x2 होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल हो गया तो आपकी लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी. एंड यू नो in previous video that if the lines are perpendicular, means if line makes intercept of 90 degree with the x-axis, then in that case the slope of that particular line is not defined. So we did not take x1 not equals to x1 and x2 same, because if we take x1 x2 same, then this line will become perpendicular to x-axis. How it become perpendicular to x-axis if we take x1 equals to x2? See, x1 equals to x2 means this x2 comes to this x1. If x1 is equals to x2, if x1 becomes equals to x2, अगर x1 और x2 सेम हो जाते हैं तो ये x2 x1 के पास आ जाएगा, तो फिर ये q का जो पॉइंट होगा वो भी इधर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर x2 जो है वो x1 आ चुका है, तो इसका मतलब x2 और x1 बराबर हैं, तो यहाँ से फिर q x2 नहीं लेगा बल्कि x1 ही लेगा, और उसका y2 इसके साथ ही रहेगा. तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा q, और अगर यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. और जब परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब इंक्लाइनेशन उसने थीटा बनाया, और tan थीटा tan 90 होगा बिकॉज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो tan 90 आपका नॉट डिफाइन होता है. इसीलिए जब भी x1 और x2 लेंगे हम, x1 और x2 को इक्वल कर देंगे हम, तो उस केस में आपकी जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ. फॉर दिस रीज़न, और जब परपेंडिकुलर बनेगा तो उसकी जो स्लोप होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी. फॉर दिस रीज़न हम x1 और x2 को इक्वल नहीं लेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम x1 और x2 को डिफरेंट ही रखेंगे. ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी दैट वाई वी टेक x1 नॉट इक्वल्स टू x2. ओके,
Now we have to do a little bit of construction here. Suppose we draw QR perpendicular to x-axis. We draw QR perpendicular to x-axis, and from there we draw PM perpendicular on QR. तो हमने क्या किया, we draw QR perpendicular to x-axis. हमने QR परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है x एक्सिस पे, और साथ में PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन QR. ओके, इट्स मीन नाउ कंसीडर द ट्रायंगल. ओके, नाउ सी ये लाइन थोड़ी सी हम इसको x एक्सिस के साथ टच करवाते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन का इंक्लाइनेशन लेना था, इसलिए सपोज कीजिए कि यहाँ से ये लाइन जा रही है. ओके, सो suppose the inclination of this line is theta. If you don't know about the inclination of a line, you must watch previous video, then you got the clarity about the inclination of a line. In fact, inclination of a line is nothing, that is the angle which the line makes with the positive x-axis in anti-clockwise direction. Here the line is L, and it makes and this is our positive x-axis, and this line makes an angle theta in an anti-clockwise direction. So theta is the inclination of line. We take QR perpendicular to x-axis and PM perpendicular to QR. Okay, now see, there is two cases that when our theta is acute and when our theta is obtuse. Acute angles are those angles which are less than 90 degree, and obtuse angles are those angles which is greater than 90 degree. Okay, so अगर हम क्या करें, if first case होगा हमारे पास when our theta is acute. Okay, when our theta is acute means less than 90 degree. So in this case, this line has an inclination of a line which is less than 90 degree. So this figure denotes the inclination of a line is acute. ठीक है, इस फिगर में, इस कार्टेशियन प्लेन में जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रही है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए ये जो थीटा है जो एक्यूट है. अगर ये थीटा एक्यूट है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा. वाई? because these are the corresponding angles. Okay, so आपका जो एंगल MPQ होगा वो भी थीटा के बराबर ही होगा, बिकॉज इट इज़ ऑन द सेम लाइन एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा है तो ये MPQ जो होगा ये भी थीटा होगा, तो MPQ आपका थीटा है. एंड दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल PQM. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQM, if we take tan theta, then what is, देखिए अगर हम tan theta लेते हैं तो tan theta क्या आएगा हमारे पास, you know about the tan theta is perpendicular upon base. So in tan theta perpendicular upon base, and what is our perpendicular is MQ upon what is our base is our QM, MP is our base. Okay, now if you carefully see MQ, then we have the coordinates of Q x2 y2, but we don't have coordinates of M, but we can find coordinates of M by simply seeing the x-axis and y-axis corresponding to point M. To point M corresponding x-axis has the coordinate x2, and to point M corresponding y-axis has the coordinate y1. Okay, so it's mean M has the coordinates x2 and y1. Now if you know about the in basic formula of coordinate geometry, हमने पढ़ा था कि अगर लाइन में हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं. और डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, तो पिछली वीडियो में देखा था, उसमें देखिए M और Q में आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो क्या होगा, x2 minus x1 whole square. Here is x2, so x2 minus x1 is also x2, so x2 minus x2 whole square plus y2 minus y1 square, and here is y1 minus y2 whole square upon, now again this same we should done with the MP. This is our M and this is our P. Again we use the distance formula between MP, so we find the length of MP and we are provided with the coordinates of M, and we are also provided with the coordinates of P. Again we use the distance formula and we arrive at the condition, and that is x2 minus x1 whole square plus, say here is y1, M's y coordinate is y1 and P's y coordinate is also y1, so it is y1 minus y1 whole square, and there is x2 minus
x2 माइनस एक्स टू इज जीरो, जीरो होल स्केयर इज जीरो, सो हम जीरो लिखेंगे नहीं, वी रिमेन विद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 होल स्केयर, और होल स्केयर के ऊपर रूट होगा, ठीक, और साथ में नीचे होगा x2 माइनस x1 होल स्केयर, ओके, और इसके ऊपर आपके पास रूट होगा, ठीक है। नाउ सी y1 माइनस y2 का होल स्केयर है, तो क्या हम इसे y2 माइनस y1 होल स्केयर लिख देंगे, तो y2 माइनस, अगर हम यहाँ पे हमारे पास y1 माइनस y2 होल स्केयर है, तो अगर हम इसे y2 माइनस y1 का होल स्केयर लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कल वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको, हम फिर से देख लेते हैं। सपोज करो 3 माइनस 6 का होल स्केयर हो, चाहे 6 माइनस 3 का होल स्केयर हो, दोनों के आंसर आपके जो होंगे वो 9 ही आएंगे। इसलिए चाहे आप y1 माइनस y2 का होल स्केयर लिखें, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्केयर लिखें, आपका जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसके आगे जो होगा वो मैं आपको ऊपर लिखवाता हूँ। तो आपका आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्केयर एंड रूट अपॉन x2 माइनस x1 होल स्केयर रूट। So square root cancel and we are remaining with y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is our tan theta. So our tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. But from previous video we know that tan theta is the slope of the line. So in other sense we say that this tan theta is the slope of line, and slope of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So when we are provided with the 2 points of a line whose coordinates we know, then the formula for finding the slope of a line is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and in this section we know about how this formula will come. Okay, I hope you got the clarity. But this formula is right when we are using the case first, and our case first is when theta is acute angle but our theta is also obtuse, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर हमारा थीटा obtuse होगा तो उस केस में क्या होगा, तो वो हम चेक करेंगे अब, ठीक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आवर थीटा इज obtuse। Let's see, suppose this is our line and this is our positive x-axis. Theta is the inclination of a line, and you know what is inclination of a line. Inclination of a line is an angle which the line makes with the positive x-axis in an anti-clockwise direction. So this is our line, and this line makes the angle with positive x-axis in an anti-clockwise direction is suppose this, and this is our theta. And if this is theta, then what is this? This is our 180 minus theta. Okay, you know how this 180 minus theta becomes, because these two angles sum is 180 degree. If this is theta, then it is 180 degree minus theta. Same, we have to take the 2 points on this line, so P and Q. Suppose this is my P and this P is x1 y1, and here is my Q and this Q is x2 y2. Then we again draw QR perpendicular on x-axis and PM perpendicular on R. PM perpendicular on R. So this we do the construction. This point is M. Same construction as we done in our case first. Okay, but in this case our theta is obtuse. Okay, so case second when our theta is obtuse. Okay, now you can see that if this is 180 degree minus theta, then this is also 180 degree minus theta, because corresponding angles. Okay, so angle MPQ is equals to 180 degree minus theta. Okay, so in right angled triangle PMQ, tan theta, here theta is 180 degree minus theta, so we take tan 180 degree minus theta is equals to base upon perpendicular upon base. And what is our perpendicular? Our perpendicular is MQ, and what is our base? Base is our PM. Okay, okay, so here we use MQ. What is MQ? MQ, again we have to find the coordinates of the M, and
the coordinates of m are x2 and corresponding to y it is y1. So x2 and y1 are the coordinates of m. Again we use the distance formula for finding mq, that is x2 minus x2 whole square. Again same formula, x2 minus x2 is 0, so we cancel this. Now we are left with y1 minus y2 whole square root, and below is pm, in denominator there is pm, so we find the pm distance by using distance formula, and here we get x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1, but the coordinates of p and m or y coordinates of p and m are same, so we don't write them because they cancel out each other. So we arrive at this situation. So यहाँ से हमारा स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट y1 माइनस y2 एंड अपॉन x1 माइनस x2. जहाँ फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर काटने से पहले, चाहे y1 माइनस y2 लिखें चाहे y2 माइनस y1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और हम यहाँ पे y2 माइनस y1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पीछे जो केस 1 पढ़ा था उसमें उसके जैसे बन जाए क्वेश्चन तो हमें फार्मूला लर्न करने में इजी होगा. तो अगर हम यहाँ पे y2 माइनस y1 कर देंगे तो एप्ट्यूज केस लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्यूट में फार्मूला बना था स्लोप निकालने का वही हमारा एप्ट्यूज में बन जाएगा. तो इसलिए इट्स बेटर टू टेक y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है जब स्क्वायर हो ऊपर, तो इसलिए हम यहाँ पे y2 माइनस y1 ले सकते हैं और सेम हेयर x2 माइनस x1 ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर रिमेनिंग विद y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो आवर tan 180 डिग्री माइनस थीटा is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. But this is not our slope of a line. Why? Because the slope of a line is simple tan theta, so we have to simplify it further. Okay, let's see. Now we get the result that tan 180 degree minus theta is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now tan 180 degree minus theta is minus tan theta, which is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, and if we okay, now tan theta is equals to minus, if we multiply both sides with minus 1, this is positive, then this is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is tan theta is equals to minus y2 minus y1 upon, if we take minus common from this side, so we arrive at x1 minus x2, minus minus cancel, and this is y2 minus y1 upon x1 minus x2. Okay, so our tan theta is y2 minus y1 upon, now the order is not mattered, so we can write x2 minus x1. Okay, so in this case we have the slope which is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, because tan theta is our m. Okay, तो इसलिए जब obtuse angle भी होगा तो भी हमारी slope same रहेगी. So we see if we have 2 points of a line whose coordinates are given, then how we can find the slope of the line. There is a particular formula for finding the slope of a line, and that formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. By simply putting the coordinates of that 2 points in this manner, we arrive at the slope of the line. It hardly matters what inclination of a line makes with the positive x-axis, either it is acute or obtuse, it hardly matters because we arrive at the same formula, and that formula is this one. I hope you got the much clarity about this. Now what happens if we take the parallel lines, and what happens if we take the perpendicular lines? If we take parallel lines, then how our slope will relate with each other of these parallel lines, and if we take perpendicular lines, then what is the relation among these two perpendicular lines slope? Okay, let us see about that conditions. So conditions for parallelism and perpendicularity of the line
in terms of their slopes. Okay, now if the lines are parallel, then what happens to their slopes? Let us see. Suppose this is our Cartesian plane, okay, and here we take two parallel lines. Okay, suppose this is our line L1 and this is our line L2. Okay, this is our positive x-axis and this is our positive y-axis. Okay, now suppose L1 makes angle alpha with positive x-axis. Okay, this is our L1 and it makes an angle alpha with the positive x-axis in anti-clockwise direction. In other words, we say that the line L1 has an inclination alpha. Okay, similarly L2 has an inclination, suppose we take beta. Okay, similarly L2 has the inclination which is beta. Okay, now since these two lines are parallel, since L1 is parallel to L2, if the lines are parallel, then their corresponding angles are equal. You see that L1 is parallel to L2, so alpha and beta are the corresponding angles because they make the same because they lie on the same side in which they made the angles. So corresponding angles must be equal if the lines are parallel, and L1 is parallel to L2, so alpha is equals to beta. So alpha is equals to beta. Now if alpha is equals to beta, then tan alpha is also equals to tan beta. Okay, and what is tan alpha? Tan alpha is our tan alpha is the slope of line L1. This is our slope of line L1. And what is tan beta? Tan beta is our slope of line L2. Why they are slopes? Because you know in very first video of this series that if the line makes if line makes an angle with the positive x-axis in anti-clockwise direction, and if we take the tangent of that angle, then the tangent of that angle is slope of the line. See, L1 makes alpha angle with the positive x-axis in anti-clockwise direction, so the tan of alpha is the slope of line L1. That's why I write tan alpha as the slope of line L1. In a similar manner, tan beta is also the slope of line L2. And suppose slope of L1 is m1 and slope of L2 is m2. So if the lines are parallel, then the slopes of that lines is equal. ठीक है, तो अगर जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी जो स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. कैसे इक्वल होंगी वो हमने अभी देख लिया. नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी टेक द कन्वर्स पार्ट कि अगर किन्हीं दो लाइंस की स्लोप्स पैरेलल हैं तो क्या लाइन फिर पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? लेट अस चेक इट आउट. This is our direct part. Now check out its converse part. Conversely, suppose if the slope of line L1 is equals to slope of line L2, that is m1 is equals to m2. Okay, then what happens to the lines? See, m1 is equals to m2, then what is m1? M1 is simply tan alpha. M1 is the slope of line L1, and L1 makes an angle alpha with the positive x-axis, and the tangent of the angle, or in other sense tangent of the inclination of a line is slope. So in place of slope of the line L1 we write tan alpha, and m2 is tan beta because it is the slope of line L2. So tan alpha is equals to tan beta. Now you know that if the angles are between 0 and 1 degree, by the property of tangent, that if the angles are between 0 and 180 degree, then tan alpha equals to tan beta implies alpha is equals to beta. Okay, so if alpha and beta are between 0 degree and 180 degree, then if tangents of the two angles are equal, then that two angles are equal, means alpha is equals to beta. Okay, alpha is equals to beta. Now if the and if you check these angles through the Cartesian plane, you find that these two angles are the corresponding angles, but these angles are corresponding angles, and if corresponding angles are equals of two different lines, then that
टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल्स। ओके, ये पैरेलल की और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों देन वो जो लाइनें होती हैं जिसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने होते हैं वो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। तो अल्फा L1 से बना है तो इसका मतलब L1 और बीटा L2 से बना तो L2, ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल होंगी। सो कन्वर्सली पार्ट में अगर हमने दो लाइंस की स्लोप्स इक्वल ली तो हमें L1 पैरेलल मिल जाती है L2 के। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने पढ़ी कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारी स्लोप्स इक्वल होंगी, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स ऑलवेज इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइंस ऑलवेज पैरेलल होंगी। सो इट्स मीन टू वर्टिकल लाइंस L1 and L2 आर पैरेलल, टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 and L2 are parallel if and only if इसे हम IFF भी लिखते हैं, if and only if their slopes are equal, अगर उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि अगर स्लोप्स इक्वल होंगी तो लाइंस ऑलवेज पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप्स ऑलवेज इक्वल होंगी। तो ये थी कंडीशन पैरेललिज्म की। What happens if the lines are perpendicular? अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये तो कंडीशन देखी हमने पैरेललिज्म के लिए। अब देखेंगे अगर परपेंडिकुलर हैं दो लाइंस तब उनकी स्लोप्स पे क्या फ़र्क होगा, उनकी स्लोप्स कैसे रिलेशन रखेंगे अपने बीच, वो हम चेक करेंगे। Now let us take two Cartesian plane. Suppose this is my Cartesian plane, here it is a positive x-axis and here it is a positive y-axis. Now I will take line L1 and L2 in this Cartesian plane in such a manner that these two lines are perpendicular to each other. Suppose this is my L1 and this is my L2, and they intersect each other in such a way that the intersection angle is 90 degree. Okay, this is my L1 and this line is my L2. Okay, and suppose L1 has an inclination of alpha and L2 has an inclination of beta. Okay, now see, L1 is perpendicular to L2. Okay, L1 is perpendicular to L2. Okay, see, L1 is perpendicular to L2 at this point. Suppose this point is A, so L1 is perpendicular to L2 at A. Now you know that in a triangle, if there is an exterior angle, then this exterior angle is equals to sum of two interior opposite angles. Means if this is 1, this is 2 and this is 3, then angle 3 is equals to angle 1 plus angle 2. This is the property of exterior angle of a triangle. If there is an exterior angle in a triangle, then that angle must be equals to the sum of two interior opposite angles. And if you check out this triangle, suppose this is our B, this is our C. If you check ABC triangle, in ABC triangle this beta is an exterior angle and this beta must be equals to the two opposite interior angles, sum of two opposite interior angles, one is alpha and another one is this angle. And you know that if two lines intersect each other then these angles must be equal to each other, and that angles here are popularly known as vertical opposite angles. So if it is 90 degree then it is also 90 degree. So now we know that in triangle ABC exterior angle जो होगा वो equal होगा sum of two interior opposite angles, and here exterior angle is beta and sum of two interior opposites means 90 degree plus alpha. Here angle A is equals to angle A is equals to 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल A जो है वो इसके वर्टिकली अपोजिट है और L1 L2 परपेंडिकुलर है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल A है, सो एंगल A भी आपका 90 डिग्री होगा। सो वी गॉट द रिजल्ट बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। नाउ इफ I take tangent on both sides, then tan beta is equals to tan 90 degree plus alpha. Okay. Then tan beta, and you know that tan 90 plus theta is equals to minus cot theta.
So here it is minus cot and theta is alpha, so we write minus cot alpha. Okay, further we write tan beta is equals to minus cot is the reciprocal of tan, so in place of cot alpha we write 1 upon tan alpha. Okay, now tangent of the inclination of a line L2. See, this is the line L2 and this L2 has an inclination beta, and here we take tangent of inclination of a line L2. This means this is the slope of line L2, and let us suppose the slope of line L2 is m2 and minus 1 upon and tangent of alpha, and alpha is the inclination of a line L1, and we take here the tangent of the inclination of a line L1. So tan alpha is also the slope of a line L1, so here we denote slope of a line L1 with m1. So m2 is equals to 1 upon m1 when the two lines are perpendicular to each other. Okay, or in other sense we say that this m1 comes to this side, that is m1 into m2 is equals to minus 1. Okay, so if two lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes must be equals to minus 1, or in other sense the slope of one line is equals to negative of the reciprocal of slope of another line. Okay, this is the condition of the slopes when two lines are perpendicular to each other, and this is also the necessary and sufficient condition. If the product of the two slopes is equals to minus 1, then the lines must be perpendicular to each other, and if the lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes must be equals to minus 1, or in other sense we say that the slope of a line is equals to negative of the slope of another line. I hope you got also the clarity about the condition for the perpendicularity of the line in terms of their slopes. So I hope you like this video, today's video, and you know something about the slopes of a line, that how could we find the slope of a line when we are provided with the 2 points of a line whose coordinates are given to us, and what are the conditions of the parallelism and perpendicularity of a line when in terms of slopes. So I hope you like this video, और ऐसे ही पढ़ते रहें, और इस अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड स्टडी हार्ड. Thank you so much.